Hi guys, welcome back to chapter 2. We're very excited because this episode is sponsored by Bumble. So I know second chances in love can be tricky. That's why I love that Bumble added the dating advice hub. It's like a guide in your pocket where you can get everything romance and relationships related. So you don't have to spam your best friends when you're overthinking. And for the rest of it, well, we're here. Oh my God, how are you? So good to meet you. Such a pleasure. Oh good my evening. God, I wish I could say the same thing. Oh, you're so mean. I hate you. Were you in a I can fix him phase ever? That is a turn off for me. Oh wow. Yeah, because I want to be taken care of emotionally. Rolling? देखो ऐसे इंट्रोड्यूस कैसे करना है पॉडकास्ट में मिलिए Hi, मेरी सहेली Fatima. से. Lovely to meet you. Thank you for coming to chapter 2. Oh my God, you're welcome. I know you very deeply. तेरा मेरा जो रिश्ता है वो बहुत ही fun और deep और emotional type का है. Correct. And I wanted the world to get to know you in the way that I know you today. Aw, that's so So sweet. they fall in love with you more and more as I have. Aw. Yeah. I hope we don't start dating after this episode. Please. कोई तो मिले. कोई तो मिले. कोई तो मिले. तू भी चल जाएगी. मैं भी चल जाऊंगी. अच्छा मैं चलने वाला लिस्ट में हूँ. I love you. चलने की जरूरत नहीं, तुझे मैं ले जाऊंगी घर. Perfect. अच्छा मुझे I want to start from the start. The start. The start of your life. Oh my God. Chachi 420, you've been a child actor. A lot of people know, a lot of people don't know. Yeah. तूने फिल्मों में काम किया है as a kid. जब आप सेट पे जाते हो, एक grown-ups की दुनिया होती है. Is there something कि आपकी personality में आ जाता है which changes you? जब आप छोटे होते हो ना, आपको रियलाइज नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि आप बस एक एनवायरनमेंट में होते हो. लार्जली आपके आसपास एडल्ट्स ही है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड व्यू उस टाइम पे इतना इन्फ्लुएंस हो रहा है एडल्ट्स के व्यू पॉइंट से कि यू डोंट रियलाइज दैट यू आर ग्रोइंग older and growing up faster than another child would. Also, जो मेरा टेक अवे है, क्योंकि मैं हमेशा सेट पे थी एज अ चाइल्ड, तो जब मैं बड़ी हुई मुझे बहुत सारी चीज़ें ना इंस्टिंक्टिवली समझ में आने लग गई थी कि लाइट हो गई, ब्लॉकिंग हो गई, वो तभी रियलाइज नहीं होता है. ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट सिनेमा इज नॉट रियलिटी. Oh. करेक्ट. कि जब ये शूट होता है, मैं तो देख रही थी, बच्चा तो देखता ही रहता है कि कैसे वो लोग चीट कर रहे हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे, अगर हाइट दिखानी है तो कैमरा इधर है, यू नो, अगर कुछ दिखाना है तो इधर है, किसी को बड़ा दिखाना है तो इधर. ये जो टेक्निकलिटी है ना, वो टाइम पे यू आर जस्ट टेकिंग इन एंड ऑन सेट यू अंडरस्टैंड नाउ व्हेन यू आर ओल्डर. तो वो समझा. बट आई फील दैट व्हेन यू आर अराउंड अडल्ट्स सो मच ना, थोड़ा इनोसेंस नहीं, बट आई विश आई हैड फ्रेंड्स ऑफ माई एज टू. You didn't have any? नो, बिकॉज मैं स्कूल नहीं जाती थी. At all? वेरी रेयरली. Because you were shooting a lot. आई वॉज शूटिंग अलॉट. आई वॉज चाइल्ड एक्टर. सब कुछ बाहर नहीं आया, बट मैंने टीवी शो भी किया है, मैंने बहुत सारी फिल्में की है, मैंने एड्स किया है जब मैं बच्ची थी. और स्कूल जाने से तो नफरत थी मुझे. किसको पसंद होता है मुझे नहीं मालूम. आई हेटेड इट. तो वहाँ पे जब भी जाती थी, तो आपका यूनिट नहीं है ना, आपके फ्रेंड्स नहीं है. आप चाइल्ड एक्टर हो, लोग आपको स्टार समझते हैं, बट आप तो बच्चे हो. तो द अदर किड्स दे ट्रीट यू एज इफ के आ गई. Oh, like you must be arrogant. They must be thinking. बट मेरे को तो दोस्त चाहिए. सो आई एम लाइक कि मतलब आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू be फिट friends इन, with them. टू फिट इन, टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, टू बी लाइक्ड. सो माई एंटायर चाइल्डहुड आई वांटेड टू बी लाइक्ड बाय माई फ्रेंड्स और बाय पीपल. और वो इतना इनग्रेन्ड हो गया कि व्हेन यू ग्रो ओल्डर, दैट इज, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. You're saying कि वो सारी चीजें थी उस वक्त of becoming this person who had to be aware and subconsciously grasping कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. That obviously had its pros and cons. Correct. अगर हम cons की बात करें तो it's probably growing up too quickly. हाँ, and being people exposed, pleasing, being नहीं, exposed. but also being exposed to an environment which might not be entirely safe for a child. Oh. Yeah. Okay. Because there are people who can take advantage of children. Right. And that happens. A lot of children are in an uncomfortable environment.
So to tackle, to understand what is okay, what Very is not. quickly to understand good intention, bad intention. Bad intentions, and not only for girls, even child boy actors. It's very tough for boys too. So as you grew up and your life happened, obviously Dangal happened. Yeah. Which changed your life completely. After that, you went on to do so many more amazing films. You had a banging year. You have a film coming out now, which, by the way, the new song is It's beautiful. Is amazing. I know. It's stuck in my head. बहुत सुंदर है. Because I feel that it's just got this old world charm. Yes. Which nowadays love doesn't have. Yeah. You know, you don't kind of feel that kind of love. It's, romance. There's no romance left in love. It's become very like ऐसा rational, analytical. बहुत ऐसा कि हाँ ये है, ये rules है, ये boundaries है. पर नहीं चाहिए कुछ भी मेरे को प्यार चाहिए. तो कैसे होगा यार? हम I mean I know हम लोग बहुत बात करते हैं इसके बारे में off camera, but on camera also I wanted to discuss कि what is the next era of love going to look like? जो अगला चैप्टर है लव का, जो आज की डेट में है, जो हम बात करते हैं मिलेनियल्स और द जेनजीज, व्हाट इज दैट सेकंड चैप्टर ऑफ लव इन दैट सेंस? लाइक वेयर डू यू सी द वर्ल्ड इज हेडिंग? ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन व्हाई फिल्म्स do that to you, because they call you and they make you feel like that love still exists. Does it exist? And what is the new love according to you? Now things are shifting. हमारी जो understanding है कि क्या है, हम तो बड़े confused generation. Yes, because we were in the middle of everything. Correct. पहले फोन नहीं था, फोन मिला, फिर SMS था, नोकिया 1100 था, वहां से फिर वो ब्लैकबेरी आया, तो हर चीज इतना जल्दी चेंज. अब AI आ गया है, चैट जीपीटी कर लो, थेरेपी जाने की जरूरत नहीं है. आई एम फीलिंग सैड, चैट जीपीटी 50 चीजें लोग कर रहे हैं, पर मैं करती हूँ. बाय द वे हमारी थेरेपिस्ट सेम ही है, तो बहुत मैं प्यारी सुजन से ये वाला एपिसोड जरूर शेयर. प्लीज, आई लव हर. मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई उसकी वजह से. मेरी बहुत हद तक हो गई है. पर फिर इस जनरेशन का क्या, जो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अमेजिंग थेरेपिस्ट लाइक सुजन, दे आर ओनली डूइंग इट ऑन चैट जीपीटी. आई डोंट नो यार, पता नहीं. जितने लोगों से मिलेंगे, गलतियां करेंगे, बुरे रिश्ते में रहेंगे, उससे सीखेंगे, फिर होपफुली इतना ट्रॉमा लेके ना बैठ जाए कि उसको दूसरे रिलेशनशिप में कैरी करे. Correct. I think essentially आज जो हम करने वाले हैं, you and I are going to bond over our shared trauma of relationships and dating. Oh God. No, but what I'm trying to understand is कि आगे जाके in the next phase, okay, let's talk about you. Let's talk about you. How do you see yourself giving love a second chance, being again in a relationship of any sort in the future? What are the things that will be possibly non-negotiables for you? Are you feeling that your non-negotiables have to change? When you're alone ना, आपकी ग्रोथ इतनी ही होती है, पर जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, क्योंकि वो इतना क्लोज होता है, आप ग्रो बहुत करते हो. You grow more. Because your intelligence is challenged, your emotional intelligence is challenged, and your being is challenged. So what you think that you are, maybe you think कि आप righteous person हो, but जब भी आप conflict state में आते हो, तो भी आप mean भी हो जाते हो. तभी आप बहुत सारी चीजें बोल देते हो हर्ट करने के लिए. Which you won't get to experience that side of yourself unless you're with somebody. You're with somebody. दोस्तों के साथ एक लेवल का होता है. मतलब आप दोस्तों के सर पे थोड़ी ना चढ़ सकते हो. और लड़ाई उनसे होती नहीं है. You only fight mostly with your partners. 100%. That is the time when you understand yourself more. चाहे वो बुरा रिश्ता हो या अच्छा. बुरे से आप सीखते हो कि ये वापस नहीं करना है, या you know, now I know कि ये चीज़ों से मैं डील नहीं करूँगी. मैं समझती हूँ. देखो, मर्द भी या औरत भी, it can be anybody. I may have certain boundaries जहाँ पे मेरे को लगे कि आप फ्लर्ट नहीं कर सकते हो. दूसरे कपल की बाउंड्रीज अलग हो सकती है कि हम लोग ओपन रिलेशनशिप में, बट मेरी बाउंड्रीज अलग है, तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग और एक्सेप्ट कर सकते हैं. आप भी गलत नहीं हो, मैं भी गलत नहीं हूँ. पर यही प्रॉब्लम आती है ना फैटी, कि अगर जब हम नॉन जजमेंटली जाते हैं और एक ओपन सिचुएशन से बात करते हैं, आप भी गलत नहीं हो, हम भी गलत नहीं है, पर मुझे ये ओके नहीं है और आपको ये ओके नहीं है, और हम दोनों की जो बाउंड्रीज है वो क्लैश हो रही है. करेक्ट. And this is the most common thing that I see in relationships, in couples, in my friends who I know, in my own personal life, through you, through me, all of that. मेरे को यही realize होता है कि people are stuck to what is not okay for them, and this is not okay for me, so there is no mid path left. Correct. I think in the older generations, the women used to take the sacrifice. They used to be like, ठीक है कोई बात नहीं, because also largely women were not as
out there in the workforces. They were not so financially independent. Yeah, they were not a paying population. Correct. Because they weren't earning. They were like, they didn't have an option also. Correct. And that obviously weighs on them. Yeah. Ki yaar, I don't have an option to go out and earn. Okay, if this man doesn't want me to dress a certain way or eat a certain way or meet a certain person, I'll change that about myself. Correct. But today, I don't think any girls that I know, मैं तो किसी भी लड़की को नहीं जानती हूँ जो अपनी non-negotiable से हटेगी. And इस चक्कर में मुझे लग रहा है कि this is where the deadlock is, this is where the stalemate is, because I think men will have to take that one step forward, where they are like, okay boss. कुछ है जो इवॉल्व हो रहे हैं, मुझे लगता है जिनमें वो मैच्योरिटी है कि जो अब जैसे मैंने एनालाइज किया कि जहाँ पे मैं सामने वाले को नहीं जज कर रही हूँ, खुद को नहीं जज कर रही हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्यों इतनी ऑब्सेस्ड हूँ एंड व्हाई एम आई नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग. आई थिंक अगर वो माइंडसेट से कोई लड़का आएगा कि ठीक है ये रिश्ते को बचाने के चक्कर में मैं खुद को समझ रहा हूँ और खुद को समझने में मैं थोड़ा फॉरगिविंग हो रहा हूँ और उसके इमोशन समझ रहा हूँ. मे बी अगर टुमारो आई एम रियली इन लव विद समबडी एंड आई रियलाइज कि यू नो व्हाट, उसको ये पसंद है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ, विच इज ओके. टुमारो यू कुड बी देयर, टुमारो ही माइट बी लाइक यू नो व्हाट, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आई वांट दिस पर्सन. तो यू हैव टू बी लकी इनफ टू फाइंड दैट पर्सन फॉर यू. Is it luck? 100%. It's luck? I think it's luck. To fall in love is a privilege. It is. It is. अगर आपको प्यार में पड़ गए ना तो आप बहुत लकी हो. And you should protect it. But you should protect it. Likely, a lot of people in our generation would have fallen in love maybe once or twice already. Yeah. Would have been in relationships maybe 4 to 5 times already. Yeah. And there is a certain sense of fear and I'm done and I'm exhausted that I sense. Yeah. वो तो मुझ में भी है. We've spoken about it. Yeah. सब में ही है. Yeah. So, like, what do you tell yourself in this aspect of your life? कि you want to give love another chance. You want to go out there again. Like, what is that thing that makes you want to do it again? You know, knowing all the information that we know and we've just spoken about. Why is it called falling in love? Because when you fall, you have no control. Yeah. So when it happens, it happens. कितनी भी बाउंड्रीज कर लो, कितना भी बना लो, नॉन नेगोशिएबल कर लो, जब अगर पड़ गए, गिर गए, तो बाद में वापस सारी तकलीफें चालू होगी. प्यार में गिरना ही क्यों बोलते हैं? प्यार में उठना क्यों नहीं बोलते हैं? गिर के उठते हैं. गिरने के बाद उठते हैं. What kind of a person are you in love? Like, let me ask you a few questions, okay? About the kind of person that you're in love. Are you like were you in a I can fix him phase ever? That you want to be with people who you can fix? Once some random boy, but then I realized मुझ में वो है नहीं. You're not a fixer? No, I can't. I don't. Which is strange, Fatty, because most women are fixers. Like the whole persona of the damaged, mysterious man who doesn't know his own feelings is very, very attractive to a lot of women. That is a turn off for me. Oh, wow. Yeah. Because I want to be taken care of emotionally. I want to be the child in the relationship. My emotions are I'm very vulnerable, very volatile with my emotions. I'm learning to get, to a point grasp where of your own. at least फटू नहीं. ऐसे इमोशन ये और ये नहीं हो सकते, यहाँ पे भी हो सकते हैं. बट प्यार में ना ऐसे अगर मैसेज भी नहीं आया, 1 घंटे का गैप है, आपने नहीं किया, मेरा होता है कि यू डोंट केयर, यू डोंट लव मी. आई एम हाँ फुल एक्सट्रीम. मैं बहुत पैशनेट हूँ. Oh, so are you saying then, are you the needy one? I am the needy one. Oh. But वो neediness भी चेंज होती है. अगर आपको ऐसा इंसान मिले जो आपको वो देना चाहता है, who makes you feel secure? या who makes you feel, or who wants you. Let's security को साथ में हटाते हैं, जिसको आपके साथ रहना है. And I have experienced that where I felt that I was really loved. In fact, after a point I was like, ये थोड़ा ज़्यादा है, मुझे थोड़ा स्पेस दे दो. तो वो नीडी का जो डायनामिक होता है ना, वो कभी भी पल्ला कोई भी साइड जा सकता है. It's a dance. It's a dance. वो कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है. The power dynamic in the relationship always shifts. So I'm not the needy one, but I want consistency. If you're into me, please be consistent. If you're
talking to me every day for the first 6 months, then please carry on Continue with that. after that. अगर पकाएगा मेरे को, नहीं कॉल नहीं, बिजी, मैं सो गया, मैं वो घर आके मैं सीधा सो गया, दरवाजे पहुंच के थोड़ी ना गिर गया है ना। घर आएगा, जूता निकालेगा, चलेगा 10 कदम, वॉशरूम जाएगा, फिर बैठ जाएगा ना, कंबल खोलेगा, चढ़ाएगा, आंख बंद करे, तब जाके नींद आएगी। तब तक तो मैसेज कर। करेक्ट but see, then I feel it is a very fine line between a needy person, like a partner also. Yeah. Sometimes consistency can also come across as boring for sure, overwhelming. Yeah. Like to someone like me, someone who keeps on messaging me or keeps on calling me, it can be a little too much. like like double texting and double calling. We've had this conversation. Yes, we've had this conversation. I would to call 50 times. Oh my God. If need be. So I do not like it if anyone calls me more than once. If I have not answered your call. Your partner. Matlab we are talking about partners. Partner. If you've called me once and I haven't seen it, that's the only reason I'm not picking it up. Correct. Or I might be in a very important, I might be shooting this podcast and my phone must be away. Correct. But surely when I get free, I will call you. Correct. And if you can't understand कि जब मैं free हो जाऊंगी मैं आपको call करूंगी और आपने मुझे 4 बार call कर दिया तो it doesn't work for me. नहीं, मेरा होता है कि बेबी मैं पॉडकास्ट में जा रही हूँ, I'll be busy. So it's like a lot of communication. Sure, but I'm saying कि अगर आप किसी को ball to ball. Fair. Yeah. But every hour, every the whole schedule? Yeah. Like for me. Okay. अभी कुछ लोगों के लिए नहीं जमता है, जैसे आपके लिए नहीं जमता। I don't think we can be in a relationship. I'm so sorry. और I'll make you like me. होता है कई दफा। होता है कि आप इतने ऐसे हो जाते हो कि सामने वाला starts craving that because there's so much of attention. They get used to it. That you get used to it. There's so much of but love this that you get used to. attention and this consistency, yeah, whatever we call it, does get boring. Anything can get boring. See, we also crave the newness of a relationship. We also crave that excitement. Now, if there is no push and pull, then it's like, okay, this person is always there. Then you'll take them for granted. Like most people take their moms for granted because मम्मी का प्यार हमेशा है, हमको पता है, अनकंडीशनल है, कंसिस्टेंट है, इसलिए मम्मी पे ही गुस्सा निकाल सकते हैं. मम्मी को ही बोल सकते हैं खाना अच्छा नहीं, मम्मी को ही बोल सकते हैं ऐसे क्यों नहीं किया आपने, और किसी को तो नहीं बोल सकते. So if someone becomes that, truly, जो हम लड़कियां often we discuss कि consistent partner होना चाहिए. If the love is like this on day 1, it should be like this on day 100. Correct. Wouldn't we only get bored? No, but then consistency is in communication and affection. That doesn't mean that you won't have contradiction in your opinions. So it can still be exciting. So if you're, अगर आप पढ़ते हो, आप लिखते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप काम कर रहे हो, तो आपका understanding of world, intelligence, emotional intelligence, वो भी बदलता रहेगा. तो for that you need to date somebody who's exciting and who's growing, हाँ, and wants to let you grow and evolve too. If you're like 18 and if you're dating somebody for 9 years, I won't be the same person. By the end of it. By the end, because मेरा exposure अलग है, मैं new चीज़ें experience कर रही हूँ, मैं नए लोगों के साथ conversations कर रही हूँ और मेरी दुनिया और दिमाग खुल रहा है. तो जब मैं अपने partner के साथ बात कर रही हूँ, मैं new information share कर रही हूँ और वहाँ पे conflict हो सकता है, वहाँ पे excitement हो सकता है, वहाँ पे चीज़ें बदल सकती है, and that is far more interesting. But also some people also feel like, अरे पर तुम तो बदल गई, जब मैं तुमको मिला था तो तुम ऐसी थी, अब तो तुम ऐसी हो. तो वो तो फिर आप immature इंसान के साथ हो. पर मतलब then तो योर इतने भी मैच्योर लोग होते हैं, मतलब होते हैं यार, ऐसा नहीं है. मतलब अगर मेरे गुड फेज में ये सब चीज़ें थी, अटेंशन था, लव था, अफेक्शन था, कम्युनिकेशन था, देयर वाज इनफ स्पेस टू फॉर चेंज, बट होता है, यू मीट पीपल, होते लोग हैं खुश, कोई तो है खुश मेरे आसपास, कोई तो है नहीं, वो पता नहीं किधर है. he will come, he shall come. बम्बल है ना ये, बम्बल तो बस सुन लो सब लोग जो ऐप पे हो, इस टाइप का जो अगर आपका डिस्क्रिप्शन है, then you know who to hit up. While we were talking about consistency being boring sometimes, I was talking to the Bumble team पीछे and they were saying that they have a new feature which is interest-based matching. Okay. So if you're going on a date, you can pick like
something cool that you both like going to a comedy show or Concert. a street food concert, maybe paddle, and that can kind of like reignite curiosity and fun back again instead of the usual just sit at home and watch TV. There Correct. are more things one can do Also, you fall in love faster. when you do the same things. क्योंकि अगर आप एक दिन a perfect date is guys कि आप पहले खाना खाओ, नाश्ता करो, मूवी देखो या कोई गेम खेलो because आप competitive हो जाते हो, then you can The playful side. comes and eventually bye. You think we can be dating gurus I think I can be for other people, for just other not people. for ourselves? Yeah. I want to ask you about red flags, right? There's a huge conversation about red flag, green flag, this flag. I personally think कि red flag भी होता है, green flag भी होता है और Yellow beige flag भी होता है, right? ये जो बीच का है. Yellow flag बुलाते हैं, okay? Yellow flag. Some red flags are okay for some people. Yeah. Like I'm okay with something, you're not okay with Yeah. it. What are the traditional, conventional red flags that don't give you the ick, that make you feel like ये मेरे लिए ठीक है, लोगों को red flag लगता है, मेरे लिए ठीक है. Like we already discussed The one. neediness. The neediness. Like is the one. want and constant communication and Yeah. oh मैं यहाँ गई हूँ पानी पिया. Love bombing doesn't seem to be a red flag for you. लव बॉम्बिंग अगर कंसिस्टेंट है, अगर ये पर्सनालिटी टाइप है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. You like love bombing. I love. Basically, you want to date a Labrador. I want to date a lab. 100%. Oh my God. But I'll also give you that. So are you saying you're also a lab? I'll give you a lot of love, lot of affection, lot of communication. But when I get upset, and this I'm realizing now कि जब मैं गुस्सा होती हूँ ना, मैं बहुत extremes में जाती हूँ. मुझे नहीं बात करनी, you don't love me, I count. I keep a count. I can be petty. Oh. I But that's great self-awareness here. हाँ. As long as you know that. And I'm working on it. Like I'm trying to change. Another aspect of the change that I want to make in my life is that I used to not be available for my friends. और हम लोग बहुत ही बहुत निगलेक्ट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि हाँ दोस्तों है, समझ जाएगा है, समझ जाएगी. Your world merges with the partner's world and हाँ मेरी दुनिया, मेरी पार्टनर की दुनिया, उसका एक मिलन हो जाता है. तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो टाइम के लिए साइडलाइन हो जाते हैं. एंड देन यू फॉरगेट के व्हेन दे नीड यू, यू हैव टू बी देयर. यू इफ यू आर मेकिंग प्लान्स कि अच्छा मैं तेरे को परसों मिलूंगी, यू मस्ट शो अप. because that consistency is required in friendship also. For people to also drop everything and be there for you when you need them. Yes. That consistency is required. तो now that I'm learning कि ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. Do you think men and women are different in love? What like do you mean? Just men as men in totality and women, how they behave, how they think, how our brain is wired, how we are conditioned is different from each other. I don't know because I've dated men जिनका feminine energy बहुत है. Okay. तो जिसकी नीड्स जो हम सोचते हैं कि एक औरत की नीड है, जैसे नीडी हो गई या कॉन्वर्जेशंस करना, बात करना, इमोशंस को कॉन्स्टेंटली सामने रखना, हाईली इमोशनल होना. I've dated a man like that who's been like that, very feminine in energy. Then I've been with somebody who's not. तो वो जो जेंडर होता है ना, that fluidity is there today. हाँ, it's there. And I've seen that in my brother also. He's also very fluid. He's highly emotional. He's highly intelligent also. Speaking of this, I have a little game that I want to play with you. Oh no. Which is called the red flag, green flag. Okay. And now that we have created a new flag, the yellow flag. So I'll give you one line about the situation and you tell me if this is a red flag for you or a green or a yellow. They take hours to reply but are super present when you meet. Red मतलब red उसको. Oh, this is super red for you. Yeah. ऐसे थोड़ी ना होता है. Hours to reply, but suppose they are busy. तो busy, then tell me you're busy. Of course, when you're working, you're working. But what if they forget to tell you that? That is a problem. You're not thinking of me then. Oh. And saying कि नहीं, I'm always thinking of me, then message. ये क्या होता है? सोच रहा हूँ but बात नहीं कर रहा हूँ. Okay. They suggest as a first date an early morning coffee instead of dinner. I like that. Why Even not? I like that. That's proper nice. green. हाँ, proper green. Like amazing. हाँ, मस्त है. Okay. They say I'm not looking for anything serious right now. अरे ये तो time pass है.
ये time pass. Then that person is not looking for a partner. But can they change? Nobody Will they changes. change? कोई बदलता नहीं. All of those things that I thought in my 20s that but I can change him, I can fix him. वो Which I don't think like मुझे नहीं anymore. लगता वो होता है largely. मतलब आपको लगता है कि मैं आऊंगी तो मेरे लिए बदल जाएगा, वो किसी के लिए नहीं बदला, आपके लिए क्या बदलेगा? वो अपने लिए नहीं बदला. वो अपने लिए नहीं बदला, आपके लिए क्या Agreed. बदलेगा? They asked to split the bill on the first date. Oh, Interesting. क्योंकि मैं तो हमेशा ऑफर करती हूँ. I would offer to pay the whole bill. हाँ. I'm not even expecting the guy to pay. मेरा तो वो इंस्टिंक्ट है कि मेरा कार्ड निकल आता है या मेरे Yes. पैसे, एंड सामने वाला बोलेगा कि नेक्स्ट वन यू टेक, सो वो हम लोग That's स्विच करते still हैं. okay. But Yeah. splitting the bill वो feels थोड़ा odd. odd लगता है It feels odd to me also. Yeah, it feels odd to me. They immediately follow all of your friends after meeting you on Instagram. Matlab, in your case, it would be that I meet this potential partner of yours. Potential partner. And they immediately follow me and all your other friends. That's odd. करते लोग ऐसा? Why? That's very green flag for me. Yeah, because they Yeah. want to know. It's like, okay, you want to be part of my life. You want to be part of my friends also. ये मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई ऐसा करेगा. ये तो बचपन में फेसबुक में करते थे. नहीं ऐसे होता है ना. होता है तो ठीक है, येलो होगा. They reply instantly always. मतलब Love. Oh Green. Green. मेरा तो नोटिफिकेशन का आवाज अलग होता है. For the person that you're Yes. seeing. Oh my God. So That is such a romantic. Yeah, I didn't know this. I'm getting to know new things. What are you about saying? Yeah, I didn't. I You knew didn't know you were that, like you romantic, know. but I didn't know like this. Okay. They don't post you on their social media. हमारी तो जिंदगी में वो सब तो है ही नहीं, हम तो छुपाते हैं. But think correct. As actors, we don't discuss हाँ, हम तो up छुपाते because other people anyway discuss Correct, it for us. But tell me that suppose you're with someone for really long, Yeah. and now you're like, this is my person for life, Yeah. and they still never post you on social media. But then are they hanging with you? Are they stepping out with you? Are they Publicly versus privately. Like maybe they're okay when there are nobody clicking pictures, हाँ. but maybe they're not okay when people are clicking pictures. But that's odd. मतलब अगर That's एक odd. बार अगर हमारी शादी होने वाली है, आप ऐसे थोड़ी ना मुंह छुपा के पीछे खड़े हो जाओगे. नहीं शादी छोड़ो, चलो just long term. No, long term. Serious relationship is serious relationship. बंधन हो या ना हो, पेपर हो ना हो, then it's a serious relationship. If they still make playlists for their exes. Exes, that's not nice. मतलब that's hurtful. That's hurtful? Yeah, playlist ex के लिए बना. Playlist is a bit much. It's personal यार. It is. इतना Playlist is a bit जाओ much. ex के पास ही जाओ. You'll put this in red? I'll put this in red. They say that they're emotionally immature, but they are self-aware. इसका मतलब क्या हो गया? कि मतलब मैं खुद ही जानता हूँ कि मेरी मेच्योरिटी कम है, पर मैं जानता तो हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ इसके हाँ बारे में. मैं जानता हूँ. हाँ. I'm aware. हाँ. तो that's a very teenager behavior. Red flag? हाँ, red flag. Red ना? Yeah. हाँ, मतलब थोड़ा तो काम कर. They say that I'm not on social media, but they follow 400 hot girl accounts. Red flag यार. Red flag? Yeah. They don't speak very highly of their exes. That's not nice. That's a red flag. Massive red flag. Yeah. Right? So I'm like, कल को मेरे बारे में भी ऐसे बोलेगा ही. मैं समझती हूँ ट्रॉमा, रिलेशनशिप्स, झगड़े, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बट इट वाज अ चॉइस टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. तो थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा. After they break up, they post motivational quotes on Instagram. Sweet. Like good things fall apart. सो स्वीट यार. This is green flag. ग्रीन फ्लैग. अभी ब्रेकअप के बाद वो कर रहा है, करने दो ना. It's sweet. It's sweet. They say they don't believe in marriage, but they want a serious relationship with all the benefits of marriage. You know, I've been in that space where Okay. I've been like कि मेरे को शादी नहीं करनी है, क्या पॉइंट है शादी का, पेपर वर्क ही है और कुछ नहीं है. I just want to live with my partner. I want companionship. In the end, that is important. But I realized, now I feel, and there's no judgment, I feel that जब भी marriage आता है ना, जब भी, because वो सोच के करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि आप सडनली उठ के शादी करोगे. उसका एक भार है, उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो आप सोच समझ के करते हो. एंड उसको आप फ्रिवलसली नहीं ले सकते. आप ब्रेकअप ऐसे नहीं बोल देते. यू हैव टू वर्क ऑन इट. देन यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. तो नाउ आई फील दैट आई वुड लाइक टू गेट मैरिड. You would like to get married? Now this is a very recent, because last time we spoke I was like नहीं क्या है. Yeah. Also in financial stability होती है, in a sense, like the government also protects you. Yes. They give you benefits. Rights.
राइट्स, बेनिफिट्स, अगर आपको साथ में कुछ बिल्ड करना है, क्लब मेंबरशिप लेना है. हाँ मतलब कितनी सारी चीज़ें, बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें. तो आई थिंक इट्स सेटअप इन अ वे दैट यू आर एक्सेप्टेड मोर इन द सोसाइटी. Not that that matters to me. I just feel that it becomes a little more heavy, as in important. Do you think more women want to get married today than men? I don't know यार. I think so. But वो लड़कों का हमेशा ही होता है ना कि हमें तो शादी नहीं करनी थी. They are never ready. Is But it? yeah, and yeah. But I know some boys जिनको Who are very happy who are also. very happy. I don't understand. It's so complex. I mean, I think that's why Person we're to trying person, to figure it out. yeah. Last, they give you space, but not distance. What does that mean? मतलब कि you will not feel कि they have disconnected with you, but they require space. They'll tell you कि यार मुझे थोड़ा space चाहिए. एक दिन के लिए मैं शायद कम कॉल करूँगा या कम बात. Communicate करोगे तो चलेगा मुझे. Communicate करेंगे तो चलेगा. And I'm learning that. So green flag. ग्रीन फ्लैग. I'm learning कि अगर झगड़ा होता है, जैसे मेरा होता है कि नहीं अभी बात करो, अभी समझो, अभी सॉल्व करना है, एंड अगर सामने वाला बोलेगा नहीं, लेट्स लाइक आई विल टॉक अबाउट इट टुमारो, थोड़ा ब्लो ऑफ कर लेते हैं स्टीम. पहले मुझे समझ नहीं आता था, अब आई एम लर्निंग टू बी ओके विद दैट कि अभी सामने वाले का कोपिंग मैकेनिज्म आपके जैसा नहीं है, तो क्या करो? अभी हर चीज़ आपके हिसाब से थोड़ी ना होगी. उसकी हीलिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कोपिंग मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी डिफरेंट. आई कांट बी सो हार्ड. मैं बहुत हूँ, मैं नीडी भी हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग में बहुत. I think I'm feeling like you could be quite a good package, complete package. You विचित्र like प्राणी हूँ मैं. vulnerability, unique. You like neediness, which is Yeah. unique. Yeah. Unique. She's like judging me. Yeah. No, we're not judging. We're not judgmental. But after running through these flags, do you think that we are possibly now, as a generation, we have so much information and इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, इतने सारे बड़े बड़े words हमें समझ में आए, avoidant attachment, anxious attachment, ये वो, that we, because of this over-analyzing, somewhere we are not able to trust just the instinct that we feel. I think वो words ना खाली ऐसे दिमाग में रहते हैं, but when you're in a relationship ना, after a point you stop thinking. Love is blind. Love is blind. You can't. वो कितना भी बोल दो, ये वो क्या, कौन सा अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं, मुझे hovering Situationship. नहीं, वो कुछ ऐसा Helicopter. Hovering. You know, you have spoken about, you've spoken about, you've been very vocal about epilepsy. Yes. And I got a moment with you where you had come for the chapter 2 event. And First event, First yes. event, and इतनी सारी lights थी, and suddenly, you know, you felt that मुझे चक्कर आ रहे हैं, I'm not feeling good, और दिख रहे हैं. Yeah. And I took you to the side, and Yeah. then we had to send you home. Yeah. I didn't realize कि इतना मुश्किल था. Epilepsy is such a difficult thing in a daily life. Yes. I thought that you get episodes and Yeah. then you heal, and then Yeah. those few days you can't work. Yeah. Do you think that kind of is difficult in the dating world for you to find someone who understands? Does it hamper that in any way? No, I don't think so. I think I've इसके वजह से, because I talk openly about it, there is awareness. क्योंकि लोगों को अब समझ में आता है कि अच्छा ये कैसी कंडीशन है. नाउ तो मेरा सब सही है. आई मीन आई एम ऑन मेडिकेशन एवरी डे, मॉर्निंग नाइट, सो मेरा कंट्रोल्ड है. वो बीच में कभी ऐसा हो जाता है कि अगर मैं 2 दिन दवाई नहीं खाई तो एक एपिसोड होगा. बट नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई कंडीशन अ लॉट बेटर. देर आर चिल्ड्रन जिनको 10 से 12 एपिसोड्स आते हैं, बच्चे. एंड फॉर अ पेरेंट दैट कुड बी सो डिफिकल्ट टू सी अ 5-year-old child getting a seizure, मतलब 10 to 15 times a day. दैट इज सो स्कैरी. तो उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मैं तो, मुझे खाली दवाई टाइम पे खानी है ना, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. सो आई हैव ऑल्सो लर्नड, बिकॉज इनिशियली व्हेन आई फाउंड आउट that I have epilepsy, I was like, I'm not going to have medication. Why? Nothing's wrong with me. I'm not, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे क्यों दवाई दे रहे हो पागलों वाली? क्योंकि आपका एसोसिएशन ये है ना कि That's all the conditioning. मुझे इतने सालों से जो सुना है. हमें पता लगता है कि मिर्गी हो गई तो देवी आ गई, या भूत चढ़ गया, या कुछ ड्रग्स कर लिया, या पता नहीं क्या, या अटेंशन. Another thing is कि हाँ, इसको तो आता रहता है. Attention seeking. Attention seeking. Oh my God. या अरे इसका तो ये हमेशा का, एपिलेप्सी ना हमेशा का है. एंड मुझे खुद के लिए बुरा नहीं लगता, मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि उनको समझ नहीं है, या उनमें वो एम्पैथी नहीं है कि वो समझे
कि जेन्युइनली कोई कंडीशन हो सकती है, क्योंकि क्या है ना, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसा नहीं है आपने हाथ में कास्ट पहन लिया है या आप लंगड़े हो या आप ऐसे लिम्प, पीपल डोंट नो दैट यू आर कैरिंग और यू डीलिंग विद समथिंग। आप देख रहे हो नॉर्मल, हंस रही, खेल रही हूँ, नाचती हूँ, काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। There will be an off day where I'll get an episode. Some people have seen it on set. Now that is my life. I have learned to live with it. And people who work with me know about it. Fair. और किसी को प्रॉब्लम नहीं है. So उस हिसाब से I think my world has been very accepting about it. But it gives me a lot of anxiety, especially earlier. क्योंकि मुझे लगता था कि अगर पैप्स के सामने आ गया तो Yeah, for your work life also it's tough. सेट पे तो चल As an actor, तेरा सारा काम light से related. So much light here but today. now so I keep testing myself. Initially I used to get triggered. तो when I did my EEG, light strobing वो strobing test करते हैं, तो उसमें पहले दिखाया था irregularities. But since I've been taking medication, it's not triggering me as much. It doesn't trigger me to some extent. तो मैं डरती भी हूँ, मुझे एंजाइटी भी होती है, तो मुझे लगता है कि मैं एकदम पैनिक कर जाती हूँ बिफोर एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू सी मी लाइक दैट। योर फेस कॉन्टोर्स, It's so vulnerable. Yeah, it's I such a don't want vulnerable people to see moment. me in a state where I'm no, ugly is not the right word, but it's not a beautiful sight to see Yes, somebody getting of a course. seizure. Also when you अभी हम लोग शूट कर रहे थे, मैं एक शो कर रही थी, हम लोग ओरछा में शूट कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था, एक बंदे को आ गया सीजर एंड माई इंस्टिंक्ट इज, मुझे पता है ना कि प्रोटोकॉल क्या है, साइड में रखो, ये करो वो करो, सब पता है मुझे, और वहाँ पे क्राउड था, तो कोई उसको जूता सुंघा रहा है, कोई उसको कुछ कर रहा है, कोई उसको पता नहीं बोल रहा है, अरे कुछ हो गया, देवी आ गई, ये वो, तो कॉन्वर्जेशन इतने अजीब होते, तो मेरा था कि हटो भाई, जस्ट लेट मी डील विद इट, एंड देन पीपल सॉ कि कैसे डील करना है, एंड देन दे केम अप टू मी, उन्होंने बोला अब अगर कभी होगा ना, हमें पता है कि कैसे करना है, बिकॉज देन दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जब किसी को आता है तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि पागल हो रहे, इसको आ रहा है बेचारे को सीजर, ये तो थतर रहा है, और बाकी लोग पागल हो रहे हैं। This makes so much sense because इसकी वजह से I think your love for vulnerability. हाँ. And your care for someone who is going through something, Yeah. not finding that neediness like a flaw, but finding it like understanding the cracks. Yeah. Probably that's where that comes from. And emotional stability, na? कि if you need me, I'm there. I'm there. Okay, on this note, we'll take a little bit of a break. Yes. So, as we were discussing, that men's conditioning is different. लड़के अलग होते हैं in terms of उनकी upbringing अलग रही है. But there is this narrative that women have started feeling कि because of that conditioning अलग होना कि they're not right or they're wrong or they should change. Chauvinist है, हाँ. या feminist नहीं है, या ये सारी चीज़ें. Yes. पता है, और इस चीज़ से मैं agree नहीं करती हूँ, क्योंकि समय बदल गया है, हम बदल गए, हमारी नीड्स एज वुमेन, हम एम्पावर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक मर्द है उसकी कंडीशनिंग ये रही है कि उसको लगता है कि अच्छा औरत को काम नहीं करना चाहिए या ऐसा रहना चाहिए, इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, जो भी है, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। बट द मोमेंट आई टेल हिम कि तू तो ये है, तू तो टॉक्सिक है, तुझे पता नहीं है, तू फेमिनिस्ट नहीं, एंटी फेमिनिस्ट है, वो भी बोलेगा हाँ हूँ मैं। अगर इतना अग्रेसिवली आएगी तो कोई भी होगा। Yes. और मुझे तो समझना पड़ेगा ना yes. कि भाई ये ऐसा क्यों सोच रहा है। I have to treat, if you want somebody to change, or if not even change, if you want this person to see your perspective, to understand me, I have to understand him. If I don't understand you and why you're feeling like that, or why you're asking कि ऐसे नहीं, why do you think women should be cooking या ये वो, उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको लगा है कि यही सही है, तो मुझे दिखाने दो उसको दूसरी दुनिया, पर प्यार से। When you go aggro, it doesn't work. और I have seen so many people around me change, कि वो पहले कुछ कॉन्वर्जेशंस में एंगेज करते थे, जब आप उनको समझाओ कि ये मुझे कैसा लगेगा अगर मेरे बारे में कोई ऐसा बात करेगा, तो वो समझते हैं, एम्पैथी आती है। अगर कोई किसी ने किसी के साथ एक सर्टेन तरीके से बिहेव किया जहाँ पे अग्रेशन है, वर्ड्स वाला अग्रेशन है, कि टॉक्सिक है, आई मीन it's abusive but in words. So just because of the gender role,
तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये बोलने से ना आप ये कर रहे हो और उसकी वजह से ये हो रहा है। अगर आपके साथ कोई करेगा तो आपको कैसा लगेगा, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कोई और चीज़ है, कोई इनसिक्योरिटी है, आपके साथ किसी ने कुछ किया है। ऐसा मन करता है कि काश दूसरा वाला खुद ही समझ जाए ना, नहीं होता है ना, समझाना ना हम भी नहीं समझते। Basically what we're trying to say is different doesn't mean wrong. Correct. Different doesn't mean right. It just means different. Different. And that's embrace okay. it. Yeah. And I think men also need to hear this. That as women we don't judge them because हम समझते हैं उनकी conditioning क्या रही है और हमारी अलग रही है. But talking about conditioning, तेरी life में ऐसी क्या चीजें हैं जो you have noticed and you have become self-aware of and तेरी जर्नी में तूने देखा है कि यहाँ मैंने स्ट्रगल किया है और यहाँ से मैं ग्रो हुई हूँ या यहाँ मेरी ग्रोथ बाकी है. What are those areas and those places for you? So I have had a very love-hate relationship with myself. And I've been addicted to a certain image of myself कि मुझे ऐसा ही दिखना है. और मेरा ना खाने के साथ बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि दंगल में मैंने वेट पुट ऑन किया बिकॉज आई हैड टू. और जब भी गोल ओरिएंटेड होती हूँ कि ये मुझे अचीव करना है ये रोल के लिए, देन आई एम गोना डू एवरीथिंग to do that. बट वहाँ पे आई वॉज ट्रेनिंग 3 hours, देन आई वॉज ट्रेनिंग वर्किंग आउट फॉर 1.5 hour. So I had to consume 2,500 to 3,000 calories every day for me to gain. Now जब ये मूवी खत्म हो गई, आई एम नॉट ट्रेनिंग सो मच बट आई एम स्टिल हैविंग 3,000 calories Because you're used to it. I'm used to it. So I'm unfit, I'm not healthy, I'm not working out, and that made it very difficult for me. क्योंकि food became my comfort space. And I could eat non-stop for hours. अभी भी होता है मेरे साथ. In fact, 3 दिन पहले non-stop for hours. And it's like I'm hating myself because I have no control. I'm just eating, and I'm upset that why can't I stop? I have no control. Then I would go starve Because I have myself. seen a very controlled side of you. 2 With extreme food. हैं. मेरे 2 extreme हैं. क्योंकि अगर मैं होलिस्टिक नहीं रहूंगी ना तो मैं एक्सट्रीम में अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने 2 घंटा नॉन स्टॉप सिर्फ खाया है. बस कुछ ना कुछ मेरे हाथ में जो भी आ रहा है खा रही हूँ. एंड देन अभी तो नहीं, देन आई वुड गो इनटू अ स्टार्व मोड. इनफैक्ट इट वाज सो डिसेबलिंग कि आई वुड नॉट स्टेप आउट ऑफ माई हाउस. Because if you step out, chances of eating something. Eating a lot would be so much, क्योंकि मैं बाहर भी खाऊंगी, घर भी जाके खाऊंगी. And then I was bulimic. So You're bulimic? yes, I was. Oh my God, I didn't know this. Yes, I was bulimic for a year because I had absolutely no control, and my understanding of diet was so rigid कि इतनी ही कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए. अब मैंने 2 घंटे में उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली. अभी भी इजीली 15 घंटे बाकी है, उसमें सोऊंगी भी, बट समझो 12 घंटे बाकी है, तो फिर वो 12 घंटे में कैसे खाने के बारे में नहीं सोचूं. आई यूज्ड टू, इवन नाउ आई थिंक अबाउट फूड ऑल द टाइम कि what I'm going to eat, I need food, I'm always hungry. Which is okay. You also work out, you're very fit, now, you look amazing. But I have gotten awareness of it because... So the unhealthy relationship is changing. Yes. It's changed. Okay. It's been years. Because Sanya knew what was happening and she's like कि Malhotra? हाँ, अपनी सानिया. She's like कि मेरे को मालूम है तू क्या कर रही है. First of all, no, I'm not doing, no, ऐसे मैं थी. फिर उसने बोला कि I just want you to know that I know. And then I felt shame. I felt कि अरे I am doing something that is not right. It's damaging me. It's damaging my mental health. Then my other friend Rahul Modi, he came into my life. He started मतलब वो smoothies, holistic खाना ये सब उसने शुरू किया. You can eat. कि you can eat be better. full and you can eat. And also that's no way to live. क्या आप खुद के ही अपने दिमाग में इतने बंधे हुए हो कि आप बाहर जाने से डर रहे हो. And now I eat very. There are days when I binge, but I'm not harsh. You're not guilty about it so badly. ठीक है ना, खा लिया. You choose it. I chose it. I didn't know this at all. I know. I don't think anybody knows. That's crazy. Yeah. But I'm so But proud I want of to your talk about journey. it because there are a lot of girls, especially Who suffer from this. Who suffer from this because उनको Of लगता this है कि perfection that Instagram demands. Instagram, social media, and it's okay if you've had any sort of a eating disorder, overeating, ये सब चलेगा. आप खुद को समझोगे ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, वो आप में है, क्योंकि आप इनसिक्योर हो रहे हो. You're eating your feelings. You're eating your feelings because you want to not feel anything. आपको नम होना है. और जब भी आप खाते रहते हो ना कॉन्स्टेंटली, तो आप नम हो जाते हो एक पॉइंट के बाद. इट्स लाइक डूम स्क्रोलिंग. इट्स लिटरली लाइक डूम. You're just eating, चक.
Oof. and your stomach doesn't get full. No, but you're feeling nauseous by the end of it because how can one, मतलब कितना खाओगे आप? Oh, so you're anyway feeling nauseous and then you induce bulimia. Yeah, and then you induce bulimia because you want to not eat anymore and you think don't want to take the calories. You don't want to take the calories. And it's so damaging because आपके lungs damage हो जाते हैं because वो acid बाहर आता है, so you're damaging your lungs. Wow, and I could never imagine, and I'm so grateful and proud of you that you are sharing this on a public platform in a sense, because there's so much shame in this, number one. Yes. Two, when I look at you, when I think about Fatty, I think of like one of the fittest girls I know. Yeah. Who will work out for an hour and a half, who's done Dangal, who's genuinely physically fit and looks fit. Yeah. I have known you for what, 5-6 years? Yeah. I've never seen you like even Weak. an inch up or down or like weak. Yeah. I've seen you as fit. Yeah. So it's very hard to tell. Imagine in such close quarters, हमारी इतनी गहरी दोस्ती है तो भी मुझे ये नहीं पता था. It's just you're weak here. You're weak in the mind. You're weak in the mind, and जब भी किसी को भी mental health disorder होता है, बाहर सब कुछ सही होता है, पर सारे जो demons होते हैं वो दिमाग में होते हैं. And इसलिए लोग समझ नहीं पाते ना. और आप ये अकेले डील कर रहे हो. आप किसी और के साथ नहीं कर रहे हो. आपकी जितनी भी demons है, dark thoughts है, वो आप अकेले डील कर रहे हो. खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो. कभी आपके हाथ से फिसल जाती है आपकी जिंदगी, कभी नहीं. A lot of women that I know have a small ecosystem of support group, like all their friends. I know you are part of mine, and I feel ki this has become a superpower for the change in, like we were talking, women in today's world. You know, so that is the thing I wish for men too, कि वो भी थोड़ा सा अपने आप को खोलें, अपने आसपास के लोगों से शेयर करें. Correct. And men and women both in this scenario. That's why I love men जिनकी बहुत सारी female friends होती है. There's an influence. 100% ज़्यादा sensitive होते हैं, समझते हैं. Like I hear from so many of my colleagues at chapter 2 मुझे बताते हैं कि यार Shovik is so female colleague, Shovik is so good to us when we have a period. Yeah. As soon as he thinks one of us is on a period, वो chocolate मंगा देता है, hot water bag मंगा देता है. समझते हैं. He would have not known अगर उसकी बहन नहीं होती. Correct. अच्छा मेरी बहन को मैं देखता हूँ महीने में वो she's cramping. Correct. उसको क्या pain होता है. So I think net I think what you and I are saying, Fatty, is that men and women need to understand each other better with a little more empathy and compassion and gentleness and love. Yeah. Okay, I know मैं तेरे को 5 साल से जानती हूँ and I know that we will know each other for the rest of our lives. I wonder कि अगर आज से 20 साल बाद मेरा पॉडकास्ट होता हम लोग दोस्त होंगे, that I know. What would it be? What would it be? Where would you be in your life? According to you, if all goes according to your plan, 20 years from now, you and I are sitting here having this conversation. Where would you be in your life if you were to just paint that picture for me? Hopefully 20 years later we'll check. I think I would just want friends around me, people who love me, people whom I love. कि अगर in the end जब भी आप मर जाते हो तो उसके बाद फ्यूनरल में कितने लोग आए वो मैटर करता है. अभी पार्टी में आप चले जाओ, 10 लोग आएंगे, अरे हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो गई. बट अगर वही लोग नहीं आए, अगर आपने दोस्त नहीं बनाए और आपने किसी की जिंदगी में कुछ ऐड नहीं किया, वैल्यू ऐड नहीं की, तो फिर क्या ही फायदा है. कुछ तो छोड़ के जाना है ना, कुछ तो बदलाव लाना है. तो मुझे लगता है कि अगर वैसा मैं रिलेशनशिप फॉर्म करूँ कि मेरे आसपास के लोग मुझसे खुश हैं, हमारी दोस्ती से, मेरे प्यार से, तो वो मेरे लिए एक आइडियल लाइफ होगी. सक्सेसफुल ऑल्सो वर्क वाइज के मैंने ऐसी फिल्मों का हिस्सा रही हूँ जहाँ पे जिसको मैं अगर लुक बैक करूँ तो मुझे लगे चलो अच्छा काम like किया if you have grandchildren you be like ये देखो नानी ने कितना अच्छा काम किया है. कितना अच्छा काम किया है कि देखो कितनी ऐसी फिल्में मैं करना चाहती हूँ. कोई बच्ची देखेगी सोचेगी कि अच्छा ये इसकी जर्नी है, मुझे भी ऐसी फिल्में करनी है, मुझे भी ऐसी जिंदगी से आना है, ऊपर उठना है कि जहाँ पे because we've not been rich. Yeah. No, we've come from a very lower middle class family. My parents are from Jammu Kashmir, migrants. यहाँ पे कोई है नहीं, family नहीं है, अपनी जिंदगी ढूंढ रहे हैं. There have been moments where they've had money. There have been moments where they didn't have money. We've lived in a one-room kitchen, जहाँ पे kitchen और hall एक ही है और एक छोटू सा room है. वहाँ पे हम रह रहे. There were times when आप राशन करते हो खाना, हर चीज़ राशन करते हो. तो वहाँ वो भी जिया है हम लोगों ने. I still today go to my अंधेरी ईस्ट हाउस एंड जब भी मैं वो एंटर करती हूँ ना, मुझे रियलाइज होता है कि बाप रे वो घर इतना छोटा है. पर जब आप छोटे होते हो ना
तब आपको नहीं सोचते वो ये घर सब। बड़ा लगता है. एंड नाउ व्हेन आई गो आई एम लाइक बाप रे, उसका दरवाजा भी छोटा है, उसका किचन भी छोटा है, उसका बेडरूम भी छोटा है, सब छोटा है. एंड फ्रॉम देयर टू कम हियर, आई एम वेरी थैंकफul. आई एम वेरी प्राउड ऑफ You're माई very proud of yourself. आई एम बिकॉज आई As you should be. या I'm so proud of you too, and your journey truly inspires me. Thank जब भी मैं तेरे से बात करती हूँ, I know some of your struggles. Today I've gotten to know more. एक्चुअली यस. And to me, I believe अगर हम आज से 20 साल बाद यहाँ बैठे होते और बातें कर रहे होते, hopefully you would have won an Oscar by then. Inshallah. Because to me, you are the best actor in the Ole. industry. You know how much So I love your sweet. work. I know. And I'm really looking forward to your film that's Thank coming, and fingers crossed, hopefully you do a lot more amazing work in the future. I'm very lucky that I've gotten to work with such incredible people. जैसे Manish is such a great guy. For him to be able to sanction a film like this, क्योंकि when you think of Manish, you think कि अरे पता नहीं बहुत ही commercial film Yeah. होगी. But he is working with very interesting directors, actors, and smaller films. So I'm very excited to be working with him. Me again. too. I'm excited for your journey, and thank you for coming and being Thank part of chapter 2. Yes. Come, let me give you a hug. So guys, thank you for watching the episode, and thank you for following chapter 2 and following your love. I would like to leave you with a thought. Second chances don't have to look like first chances, because you're better now. You're different now. So whether it is through friends or a meet cute or an app like Bumble, I think the true win is finding the person that's right for you in the now.